The flooding of last year affected over 5.2 million people in Pakistan. Out of all the flood-hit areas, the district of Badin of Sindh province was the worst affected, where people are still struggling to recover. Meherun Nisa of village Ali Mohammed Haskeli was one of the affected ones and shares a story which is not uncommon in many other villages of Badin. रमज़ान जे महीने में बोड आई हुई उन में असीं एॾो परेशान थियासीं असां ना रोड ना रस्तो घर असांजा जेके से मना पाणी उनके घेरो करे वेले उन घेरे में अंदर अची विया हलिया घर केॾी पे हाणे असीं जो टाल पतरी उहे बि अॾे असीं वेठासीं उहे बाणे बरसातुनि में काढ़े में टाल पतरी का झली थी उहे बि वियूं टुटी फाटी हाणे असीं ईअं कखनि जूं झूपड़ियूं ठाहियूं उन्हनि में वेठा आहियूं. Unprecedented monsoon rainfall, coupled with breaches in left Bank Outfall Drain (LBOD), was the major cause of the flood emergency in District Badin. LBOD was funded by different international lending agencies, including the World Bank and Asian Development Bank. Its main aim was to decrease the water logging in a few districts of Sindh by taking its effluent to the sea. इसका मकसद बेसिकली यही था कि नवाबशाह, सांगड़ और मीरपुर खास अजला का जो पानी ट्यूबवेल के वसीले सक किया जाएगा वो पानी इसमें डाला जाएगा. और जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे नताइज एग्रीकल्चर के निकलते हैं नवाबशाह, सांगड़ और मीरपुर खास यही एरिया हैं जहाँ बहुत अच्छी मतलब हमारी इनकम होती है. और वहाँ वाटर टेबल बढ़ने की वजह से फसलें सही नहीं हो रही थी. कहीं जो है ट्यूबवेल से पानी निकाला, कहीं ड्रेन जिसे हम सिम नाली कहते हैं निकासी की नहरें उनसे निकाला और फिर अल्टीमेटली उसको एक LBOD मेन ड्रेन के थ्रू स्पाइनल ड्रेन जिसे कहते हैं शहदादपुर से लेके इसको जो है वो समंदर तक ले जाने का प्रोग्राम बनाया. The outfall drain started from Nawab Shah, crossed Sangar, Mirpurkhas and entered Badin. This part was known as the spinal drain. The other portion, known as DPOD, carried drainage water to Shakur Lake, which has historically been the final destination of drainage effluents. It is said that 20% of the area of Shakur Lake is in Pakistan and 80% in India. The pathway of drainage to this final destination was changed by the concerned authorities, saying India had objected about the disposal of drainage in Shakur Lake, without giving official proof of such an objection. और दूसरा जो हिस्सा था उसको डायरेक्ट उन्होंने मगरब की तरफ उनको सीधा रवाना किया जो बिल्कुल गैर साइंटिफिक था क्योंकि मगरब के पानी जो मशरक़ से मगरब तक पानी तो जाता ही नहीं है. पानी को तो शिमाल से जुनूब तक जाना चाहिए. दुनिया के सारे दरियाओं का सिस्टम इस तरह है. ज़मीन की जो उसकी बनाई हुई उसका केमिकल सिस्टम है वो इस तरह का ही है. जो शुरू में जो है वो 30 अरब रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पे खर्च होने थे जो उस रीडिज़ाइन होने के बाद 60 अरब और अब तो 70 और 80 अरब के तकरीबन जो खर्चा हो गया है. वो तकरीबन उन्होंने 102 किलोमीटर तक ये नाला मशरक़ से मगरब तक उनको बनाने के लिए उन्होंने तजवीज़ दी. उस पर उसकी खुदाई शुरू हो गई. 40 मील समंदर के अंदर खुदाई करके आर्टिफिशियल एक सेम नाला बनाया जो कि नेचर के खिलाफ था. 2 weirs were then added to the structure. One at DPOD, where its purpose was to stop the saline effluent going into Shakur Lake in dry season and allowing flood stormwater to pass it. The second weir was a big one, called Cholri Veer, constructed to maintain water level of Katan Padeji Dand complex, through which KPOD was passing. Its purpose was to avoid saline water intrusion. Thus, the passage of drain effluent was now diverted towards the west into the sea, directly facing coastal wind velocity. The first biggest blow came in 1999, when Cholri Veer, the regulator to control the backflow of the water at the tidal link, was ripped apart by a cyclone. Seawater began to flow back since then and led to the degradation of fertile land, increasing waterlogging, large-scale migration of the local communities, and the extinction of many species of flora and fauna.
जी 99 जो तूफ़ान आयो कि काफ़ी जानवर या माल वग़ैरह या पंहिंजा मल्ला मच्छी मारण वारा उन्हनि खे काफ़ी नुक़सानु पए थो। उन्हनि जा जेके आहिनि ॿेड़ियूं आहिनि या वग़ैरह घर आहिनि ॻोठ आहिनि उहे मुकमल तबाह थी हलिया। Tidal link, which was to connect the KPOD to the sea. During early years of completion, there were complaints of sea intrusion in tidal link, and its bed had started eroding. Since then, LBOD has become a virtual disaster. Nawab Shah, Mir Pukas and Sangar districts are usually affected by LBOD during the floods. It constantly suffers from breaches in its structure because its carrying capacity was not properly designed to accommodate floodwaters, along with the traditional drainage water. स्पाइनल ड्रेन 4000 क्यूसेक के लिए डिज़ाइन थी। उसमें अगर 15-16 हज़ार पानी आए, ऊपर से 15-16 हज़ार क्यूसेक पानी आए तो लामहला उसने जाना तो है, इसी इलाके में फैलना है क्योंकि निकाल उसका प्रॉपर नहीं है। However, the major disaster unfolds in district Badin, as both the flood and drainage waters coming from north to south and seawater coming from south to north gets choked and brings disaster to the district. It happens almost every year, and that is exactly what happened during the floods of 2011. The breaches in LBOD at numerous places played havoc in the district, killing dozens of people and making millions of local communities homeless. ये पानी LBOD की वजह से इस इलाके में फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, नुकसान और भी हुए। वही हुए कि फिल्मी माल मवेशी आ गए इस लपेट में, डिज़ास्टर बड़ा बना, पूरे इलाके के आदमियों के गांव डूब गए, आदमी मर गए। अभी भी इस साल भी 30 से 40 आदमी जो हैं उसकी मौत बिल्कुल LBOD की वजह से हुई है। फसलुआ फुटियूं मिर्च उहे तबाह थी विया, कमांदो उहे तबाह थी, हर शइ तबाह थी, असांजो माल तबाह थी हलियो, घर तबाह थी हलिया, सभु शयूं अंदरि अची हलियूं। बरसाति एॾी ज़ोर हुई, ॿियो त असांखे जेका हीअ वाह लॻे हीअ सिम आहे, इहो हुनजो पाणी आयो, चो तरफ़ पाणी अची वियो, घेरो अची वियो, 5 फुट पाणी अची वियो मथे। पाणी हिकिड़ो त बरसाति जो पाणी, ॿियो जेको LBOD जो पाणी आयो आहे सिमनाले जो उल्टो पाणी आयो आहे। असांजो पाणी जेको सिमनाले में वञणु खपे, असांजी बनी मथे आहे, सिमनाले में पाणी वञण जे बदिरां सिमनाली जो पाणी असांजे घरनि में या बनियुनि में आयो आहे, उन पाणी असांजो सॼो तबाह करे छॾियो बनियूं। यहाँ के इलाके की इकानमी जो है वो पूरी तबाह हुई। इस बदीन ज़िले में जो हम बैठे हैं तो यहाँ का जो व्यापार है तो वो ट्रेड वो तबाह हुआ है। आइंदे भी पता नहीं है कि क्या होगा क्योंकि प्रॉपर अभी प्लानिंग हमें नज़र नहीं आ रही। इस साल इनका प्रोग्राम यही है कि LBOD का सिस्टम जो डैमेज हुआ है या डोरो, वो दूसरे 2 कोटरी बराज के 2 मैंने बता दिया, फुलेली गुनी और कारो गुंगरो, वो भी एक ड्रेन है, उनको जो नुकसान हुआ है उसको सिर्फ ठीक कर रहे हैं इस बरसात के से पहले। असां तो एतिरो चवंदा त गवर्नमेंट उन्हनि ते जेको एक्शन खणे, उन्हनि ऑफिसरनि ते जो ॻोठाणे जे चवण मुताबिक़ हो कमु कनि त जीअं ॻोठ उहे बची सघनि। छो ॻोठाणा रहनि था, उन्हनि खे ख़बर आहे भई हितां टुटंदो, हितां पलट कंदो। वो पंहिंजी त हलाइनि, ॻोठाणनि जी कंहिंजी त ॿुधनि ई कोन्ह था। असांखे त ख़बर आहे न बाबा हितां गारो पियो, हितां गारो पियो आहे त उते ॿधोनि, उन बंदि खे मथे करियोनि, उते अचनि ई कोन्ह था, पुछनि ई कोन्ह था। Many who lost their homes, crops and livestock are now in debt. They are struggling to find a source of earnings to pay for the debt and for their daily meal. असांजे कर्ज़ जेको आहे मिशनुनि जो, पाणी जो, फसल जो, उहो फसल त ॿुॾी विया हलिया। असां चयोसीं असां महिरबानी करे उहो असांखे माफ़ु करो, उहो माफ़ु करो, अदा असांखे कुझु असीं असांखे ॾींदासीं, छा असीं ॾींदासीं, असीं पंहिंजे पेट में वधा पिया आहियूं। ॼण बनियुनि जे में था हथु विझूं त माना पेट जी कोन थी थिए, पोइ उन करे माना बनी मां हथु कढी छॾियो अथनि। हाणे उहे चवंदा अॻिमें जेके बनी जिन खे ॾिनी उहे चवंदा पहिरीं असांखे कर्ज़ु भरे ॾियो, पोइ असीं वञी बनी संभालूं था। However, the disaster is not over, as the existing structure of LBOD is still here, threatening the lives and livelihoods of the local communities of Badin. यहाँ से एक और इसका सिस्टम बनाया जाए जो शिमाल से जुनूब की तरफ हो, जिस तरह पहले होता था। अभी पुराण को इस तरीके से बहाल करें कि पानी बदीन में खड़ा न हो, आगे चला जाए, वो सिस्टम बनाए इंजीनियर, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई इलाका ख़राब नहीं होगा, पानी के निकाल का सिस्टम बन जाएगा।
पानी के निकाल का सिस्टम कन्फर्म बन जाए, उसके बाद पानी ऊपर से आना चाहिए। The inspection panel of the World Bank has acknowledged the design faults in LBOD, and it is high time that they, along with the government and other lending agencies, pay attention towards this constant disaster created by them. Increasing LBOD's design capacity to accommodate floodwaters and diverting its disposal towards the run of Kutch, especially Shakur Lake, should be given serious consideration and implemented as soon as possible. It is unclear whether the government has the will to implement such a solution. So the question remains, for how long will the people of Badin have to suffer?